This is a third lecture of BSc third year mathematics paper 1 analysis unit 5. मैं Dr Hemlal Sahu, assistant professor mathematics, गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा है, तो कुछ प्रॉपर्टीज और हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिफाइन करेंगे क्लोजर। किसी सेट का क्लोजर क्या होता है? लेट एक्स be a metric space and A is any subset of X. Then closure is defined for any set. Now closure of A is denoted by A bar. किसी सेट का जो क्लोजर होता है उसको हम ए बार से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड बाय ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए डेस। व्हाट इज ए डेस? ए डेस इज अ डिराइव्ड सेट। ए की जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं ए डेस से। तो क्लोजर ए जो होता है ए और ए डेस का यूनियन होता है। That is a closure A contains A and A dash. Now, properties of closure. Properties of closure of a set. Closure की क्या-क्या properties होते हैं? First property is if A is subset of B implies closure A is subset of closure B. A is subset of B, then closure A is obviously is subset of closure B. Closure A is closed if and only if closure A is equal to A. If A is closed, then closure of A is equal to A, and if closure of A is equal to A, then A is closed. This both are true. Third property, closure A is a closed set. Closure A जो होता है हर सेट का जो क्लोजर होता है हमेशा क्लोज सेट होता है। भले में A क्लोज्ड हो चाहे ना हो, लेकिन क्लोजर हमेशा जो होता है क्लोज सेट होता है। दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। क्लोजर ए जो होता है क्लोज सेट होता है और वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। अगर कोई दूसरा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है तो वो जो है वो क्लोजर ए का सुपर सेट होगा। दिस इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। इनका प्रूफ बहुत इजी है, इसको आप इजीली से प्रूव कर सकते हैं। हम कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें डिस्कस करना है, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, ये थ्योरम हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। Let X be and Y rho be two metric spaces. Then mapping F from X to Y is continuous if and only if F of A closure is subset of F of A whole closure for every set A in X। मीन्स X से Y पर कंटिन्यूअस होगा if and only for every set। कोई भी अगर हम एक सेट ले लें तो F A का क्लोजर जो होता है वो सबसेट ऑफ F A का होल क्लोजर होना चाहिए, और अगर एफ ए का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर फॉर एवरी सेट ए इन एक्स, देन एफ इज कंटिन्यूअस। वी शैल प्रूव दिस। प्रूफ
xd and y row be two metric spaces. First, suppose function f from x to y is continuous. First, suppose function f from x to y is continuous. Then we shall show, हम दिखाएंगे, then we shall show f of a closure is subset of f of a whole closure for every set a in x. इसके लिए एक हम सेट लेके चलते हैं x में. लेट a be any set in x. Let a be any set in x. Now f of a is subset of f of a closure. हमने जो क्लोजर डिफाइन किया था उसमें क्लोजर a is a union a dash. So obviously closer a contains a. That is a f of a closure is subset of f of a. This implies f inverse f of a. This implies f inverse f of a is subset of f inverse f of a closure. बोथ साइड f इनवर्स हम लेके चलते हैं, उसका प्री इमेज लेके चलते हैं. And this implies f inverse f is a. F inverse f is a is subset of f inverse f of a closure. F inverse f is f. This implies closure a is subset of f inverse f of a closure whole closure. ये प्रॉपर्टी कहां से है? Since a is subset of b implies closure a is subset of closure b. क्लोजर की प्रॉपर्टी से तो a इसका सबसेट है, तो इसका क्लोजर जो होगा इसके क्लोजर का सबसेट होगा. अभी तक हमने कंटिन्यूटी जो है उसको हमने यूज नहीं किया है. हमने मान के चला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. यहाँ पर हम फंक्शन कंटिन्यूटी का जो है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे. Since f is continuous, then for every closed set C in Y, f inverse C is closed in X. इसके पहले जो लेक्चर उसमें हमने प्रूफ किया था कि f कंटिन्यूअस अगर है तो कोई भी हम क्लोज सेट y में लेके चलेंगे तो उसका जो प्री इमेज जो होगा वो x में क्लोज होगा. हियर f a closure is a closed set. हमने बताया इसके पहले कि किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है, भले ही वो सेट क्लोज्ड हो चाहे ना. सो क्लोजर a is a closed set in capital Y. So f inverse f of a closure is a closed set in capital X. और अगर ये क्लोज्ड है so this implies f inverse f of a closure is equal to f inverse f of a closure. ये कहां से आता है? ये आया since A is closed if and only if closure A is A. इसके पहले हमने जब क्लोजर की प्रॉपर्टी बताया उसमें कि A closed होता है if and only closure A is A. If A is closed then closure is A, closure A is A then A is closed. तो क्योंकि ये closed है तो इसका क्लोजर जो होता है इसके बराबर होगा. इसको हम 1, suppose this is equation 1. From 1 a closure
from one A closure, this closure is equal to itself. So this is subset of F inverse F of A closure. ये जो क्लोजर है वो इसी के बराबर होगा. So this taking its image, operating F on both sides, we get F of A closure is subset of F of A whole closure. अगर हम F यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, दिस इज F of A closure. F inverse is identity, so this is equal to F of A whole closure. So first part is proved. Now we shall prove its converse. For converse, suppose F of A closure is subset of F of A whole closure for every set A in X. Then we shall show F is continuous. Then we shall show F is continuous. हम दिखाएंगे कि ये जो है कंटिन्यूस होता है. F को कंटिन्यूस शो करने के लिए हम शो करेंगे कि अगर एक C जो है Y में क्लोज सेट है तो उसका इनवर्स इमेज X में क्लोज सेट है, कंटिन्यूस. For this, let C be a closed set. C be a closed set in capital Y. Now, taking A is equal F inverse C. Now taking A is equal to F inverse C. Then, क्योंकि ये सभी सेट A के लिए ट्रू होता है जो X में है, F inverse C is a closed set in Y, so its a pre-image is a set in X. तो ये यहाँ पर हम इसमें पुट करते हैं. Then F of F inverse C closure, then F of F inverse C closure is subset of F inverse C whole closure. Put value of A in this equation. Then A is F inverse C closure is subset of A is F inverse C whole closure. This implies F inverse C closure is subset of F inverse is identity, so this is equal to closure C. And since C is closed, this is C because C is closed. Therefore, F of F inverse C closure. Therefore, F of F inverse C closure is subset of capital C, and this implies F inverse C closure is subset of F inverse C. Suppose this is equation 2. Taking F inverse both sides, this will be cancelled and this will be F inverse C. So suppose this is equation 2, but F inverse C is always subset of F inverse C closure. Suppose this is equation 3. Every set contains in its closure. So this is subset of this. From 2 and 3, F inverse C closure is equal to F inverse C. हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्योंकि ये इसमें कंटेन हो रहा है और ये इसमें कंटेन हो रहा है, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे. So F inverse C closure is equal to F inverse C, and this implies F inverse C is a closed set in capital X. By property of closure is always closed set, and this is equal to this, so this is a closed set in X. And this implies हमने C Y में क्लोज सेट लिया था और हमने शो कर दिया कि F इनवर्स C जो है X में क्लोज्ड है. This implies F is continuous from X into Y. तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि F जो है X से Y पे कंटिन्यूस हो.
Now we prove another theorem. What is the statement of theorem? Let xd and y rho be two metric spaces. Then f from x to y is continuous if and only if f inverse b closure is subset of f inverse b closure for every set b in y. This is another definition or another property of continuity. Xd and y would be two metric spaces. Then mapping f from x to y is continuous if and only if f inverse b closure is subset of f inverse b closure for every set b in y, because we have taken in one pre-image of b, and so b is subset in y. Now we prove this. Let xd and y rho be two metric spaces. First, suppose f is continuous from x to y. First, suppose f is continuous from x into y. x से y पे हम उसको कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं, हम शो करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसको हम शो करेंगे. Let b be any set in y. Let b be any set in y. Now, since f is continuous, so every closed set in capital X, so every closed set in capital Y, its pre-image is closed in capital X. We know closure B subset of closure B. This implies f inverse B is subset of f inverse B closure. This implies f inverse B closure is subset of f inverse closure B and a closure by property of closure. Since B bar is closed, so f inverse B bar is also closed in capital X because f is continuous. This is therefore f inverse B closure is subset of f inverse B closure. Since this is closed, so its closure is equal to itself. So f inverse B closure is subset of f inverse B closure. Conversely, suppose f inverse B closure is subset of
F inverse closure B for every set B in capital Y, then we shall show F is continuous. Then we shall show F is continuous. For this, let C be a closed set in capital Y. Then, since this is true for every set B, then F inverse C whole closure is subset of F inverse closure C. Since C is closed, closure C is equal to C. Therefore, F inverse C closure is subset of F inverse C. Suppose this is equation 1. But F inverse C is always subset of F inverse C closure. Suppose this is equation 2. From 1 and 2, F inverse C is equal F inverse C closure, and this implies F inverse C is closed in capital X. हमने C जो है वो क्लोज सेट लेके चल रहे हैं Y में, और हमने शो कर दिया कि उसका जो प्री इमेज होगा वो X में क्लोज होगा. This implies F is continuous. Hence, henceforth